the Reverend Dwarika Prasad ji, who has come all the way from Toronto, Canada, to share the experience of his great life with us. After that, Dashi would like to request at the lotus feet of Reverend Vishnu ji to come and seek blessing from the holy chairs and say with love and devotion, Karan ji. परम पूजनीय प्यारे साध संगत जी, आप सभी संजनों के चरणों में दास का नमस्कार हो। सतगुरु माता सवेंद्र हरदेव महाराज की टोरंटो की साध संगत की ओर से आपके चरणों में नमस्कार। अक्सर हम यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु तुम मुझे हर प्रकार के सुख देना। दास उस बात से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन हम अगर अकेले में बैठ के एकांत में सोचें तो खुद हैरानी होगी कि सुख जो है वो दुख का परिणाम है। एक पीड़ा से हम गुजरते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है वो सुख होता है। आधे कलाक तक किचन में खाना बनता है, 5 मिनट में खाना बैठ जाता है, वो मेहनत की, ये मेरा परिणाम है। पूरा दिन हम पसीना बहाते हैं, कुछ रुपये कमा के आते हैं, वो मेरा परिणाम है। पसीना बहाता हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाती है, ये मेरा परिणाम है। कमाल की बात तो ये है कि सिवा दुख के आगे हम बढ़ भी नहीं सकते। किसी ने कहा है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, और कुछ जीना नहीं है। सतगुरु ने भी यही बात कही थी कि दर्द दर्द होता है, तेरा हो या मेरा हो, आंसू आंसू होते हैं, वो तेरे हो या मेरे हो। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो इतनी अच्छी बातें लिखी है। दास ये सब अनुभव से आपके सामने रख रहा है। बांसुरी तब तक बांसुरी है जब उसमें छेद किए जाते हैं, नहीं तो बांस का लग रहा है। कमाल की बात है। मोर के अंदर पीढ़ा पैदा होती है, पीढ़ा अपने पैर देख के कहता है कितना खूबसूरत हूँ मैं, और ऐसे पैर वो पीढ़ा जो है उसको नाचने के लिए मजबूर कर देती है, सर्जनहार बन जाती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो माँ का है। लेबर पेन से गुजरना दूसरा जन्म लेने की ऐसी बात है। लेकिन जहाँ बच्चे का जन्म होता है वहाँ माँ की ममता का भी जन्म होता है, माँ का भी जन्म होता है। उसके पहले हम उसे माँ नहीं कहते, उसे औरत कहते हैं। नाउ आई विल कम टू द पॉइंट। When she is pregnant, everybody knows it, everybody can understand, everybody can see it. But does he realize the labor pain? What is that? And how does it happen? No. Only she knows it, whether the child is awakened, whether he is playing, whether he is hungry, or he is kicking me her out. Now to realize this experience, one has to be like a mother and she has to be pregnant. Similarly, if you have said that yes, I have realized that God Almighty, the simple question is how do you feel it? What is the response you get from the God? What is the inner feeling and outer emotions you play? And what is your reaction to this pregnancy? Can you say that yes, I have conceived the Nirankar within my body. He is in and around, He is within me, He is outside. And when I see this, I feel comfortable. I am at peace. I am enjoying it. But I cannot reveal, I cannot explain. Because this is my experience. Experience cannot be the borrowed one. Experience is not what you can buy from the market. You can buy the books, but not the knowledge. You have to read them to get the knowledge. This is where we are different from others. It's not that we are trying to say that we are superhuman beings. No. But certainly not, we are not suffering from inferiority complex. And I always believe it's more dangerous to be
under the impression of inferiority. Okay, you be humble, nobody is denying that. But is it necessary to post that I am very humble, very दास, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, अगर नहीं जानते तो फिर यहाँ खड़े क्यों हैं? देखिए, we have to be very, very practical. When we are with the divine blessing, and if we churn the thoughts, then the essence comes out. We should not do the diagnosis. Never do it. If you do the diagnosis of body, you get only the blood, vein, flesh, and bones. We should go for analysis, personality analysis. This is what is required now. देखिए कितनी मजे की बात है. एक गाना आता है कि मैं पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं जी आया, मैं जी आया, मैं जी आया, मैं सारी मधुशाला पिया. कभी कोई एकांत में बैठे, sometimes sit alone and ask yourself, did you drink what you got it? Are you feeling some different changes in your mind, thoughts, body, feelings, action, reaction and response? If yes, then it's must. It's a good luck. It's a best example of the blessing of God. He is showering His blessing upon all. But it depends on what the utensil you have in your hand. If I have a glass, though there is a flow of river, I can just fill up only one glass. If I have got a jar, I can fill up the jar. But if you take the tanker, you fill up the tanker and enjoy, right? So now you have to widen yourself, not to the God. He is already omnipresent. He is beyond any image and imagination, any limit. We have to, for example, you must have seen, there is a lamp of a zero level, zero bulb, 100 watts, 200 watts, 1000 watts. Current remains the same. If I increase my capacity, I enjoy the God more than others. So now the time has come that we should sit alone, ask our own self, quest our own self, try to realize within who was I and what I am, what is my duty and what is my morality. Believe me, the day you will introduce yourself, because God is already there, and I always tell others that it was a time where we were acting like a sheep. Forget it. Be like a sheep. So that you can have a number of passengers on the ship and they can sail along with you. It's a shortage of time, I won't take much time, and I seek your blessings. That we should have a wisdom, wealth for a good cause of humanity. Universal brotherhood and its attachment within us. Why? Because we have accepted the truth that this journey is not permanent, it is temporary. But I am permanent. Nobody can say. Say with love.